नमस्कार, विश्व शांति दर्शन में आप सबका स्वागत है। एमआईट वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के स्कूल फॉर मीडिया एंड कम्युनिकेशन के माध्यम से लोरीकाल भोर स्थित विश्व शांति गुंबद में शांति, संवाद और समावेशिता पर आधारित माध्यम तथा पत्रकारिता पर चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस अनोखे सम्मेलन की परिकल्पना माइट्स के व्यवस्थापकीय विश्वस्त तथा एमआईट वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के कार्यकारी अध्यक्ष श्री राहुल कराट जी ने सन 2019 में की थी। इस सम्मेलन के दूसरे सत्र का विषय था डॉक्यूमेंटिंग पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर और इसमें सहभागी हुए थे मुंबई फिल्म्स डिवीजन के संचालक के.एस. श्रीधर, फिलामेंट पिक्चर्स की संस्थापक मिरियम चैंडी मीनाचेरी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता फराह खातून और TISS मुंबई की सह अध्यापक शिल्पी गुलाटी। इस सत्र के समाप्त होने पर सभी ने विश्व शांति दर्शन से बात की। सकारात्मक पत्रकारिता के दिशा में माध्यमों की जिम्मेदारी पर प्रकाश डालते हुए श्री श्रीधर ने कहा, ये बताइए कि विश्व में शांति फैलाने के लिए माध्यमों की एक बड़ी भूमिका है। भारतीय माध्यम क्या वो ये भूमिका निभा रहे हैं? अगर नहीं तो उन्हें क्या करना चाहिए? वैसे बहुत सारा न्यूज़पेपर्स है, बहुत सारा टेलीविज़न चैनल्स है, तो इनमें जैसे जब प्राइवेट चैनल्स आ जाता है, व्हेन द प्राइवेट चैनल्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ फंडिंग। सो वेयर द फंड्स कम फ्रॉम, सो दे विल हैव अ लीनियंस टुवर्ड्स दैट। सो एज अ ब्रॉडकास्टर, व्हेन आप अगर एथिक्स का बात करेंगे तो वो नहीं होना चाहिए। दे शुड बी वेरी पार्शियल. They should be very impartial. They should be very impartial, and they should leave it to the audience to decide whether it's right or wrong. They can't say that what is happening is wrong. आपके लिए जो सही है वो मेरे लिए गलत हो सकता है। एथिक्स एक बात है जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। मैं अगर कुछ दुनिया को बताना चाहता हूँ तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको गलत ना बताऊँ। हम यहाँ पर एमआईटी की ओर से एक चैनल चलाते हैं, विश्व शांति दर्शन, आपको सर ने बताया होगा। हाँ, मैंने देखा है। क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है। मुकेश शर्मा जी का मैंने वीडियोस देखा है। ऐसा सब्जेक्ट्स होता है जो हम लोग भूल चुके हैं, लेकिन उसमें से जो छुपा हुआ कहानियाँ हैं, जो मेरा बचपन में मेरा दादाजी से, मेरा दादी जी से सुना था, वो सब कहानियाँ अभी फिर से निकल के आ रहे हैं। वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसी विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए मिरियम चैंडी मीनाचेरी ने कहा, There is a lot of talk about world peace everywhere. Even we are talking about it. There is a big role that media needs to play in this specific direction. Do you think the media is doing it, and what it should be doing? Yeah, I think when we talk about media, we're talking about multiple media, and we live in a post-truth era with a lot of fake news being moved around, and that is also called media. I think it's doing a lot of fragmentation in society today, where people forward misinformation campaigns and form these own networks. But at the same time, I am a documentary filmmaker, and I believe that filmmakers can play a very important role in building bridges because they tell those less known stories in our world, those stories we choose to ignore or we don't see, and it is brought in a way that builds bridges, and in that way the more we understand other people and other people's realities, it is going to be a more peaceful world. At MIT here, thanks to our founder director Dr. Vishwanath Karat, we have started a YouTube channel which is called Vishwa Shanti Darshan, and we telecast only positive news. No crime, no politics, no business stories. How would you react to that? It's interesting to think that because till now, stories have been told in a way that is critical, and I think that's also important to be critical about our world, so that because we are aiming for a better world. But having said that, it can also be very toxic situation where it's only breeding self-negativity. But I think a better approach is to leave stories open-ended, and the same kind of truth-seeking or the solutions we are looking at becomes part of the narrative rather than to have a very clear set agenda. So I think the journey is so important. शिल्पी गुलाटी के अनुसार सकारात्मक पत्रकारिता इस समय की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सवाल ये है कि विश्व शांति के लिए मीडिया का बड़ा रोल है, बड़ी भूमिका है।
क्या आजकल मीडिया ये भूमिका निभा रही है? In terms of contributing to the idea of world peace, I feel like some good work is happening where, people are talking about, for example, humanitarian crisis. The crisis of refugees across the world. We know the kind of crises that are happening. The other important thing that I think media, all kinds of media, is also reporting is on the idea of climate change. These two things I feel like are increasingly being talked about. It's also reflecting on the current experience, like we talk about how media also reflects on what is happening in the world as we're experiencing right now. And I think these are two major crises that I think the world is facing, which I think reporting through media is a way to also make people understand what's happening, especially with regard to the refugee crisis. I think what media is doing and should also do, increasingly also do, is make people also understand the gravity of the situation. The other thing the media should do is basically bring out stories of people who are not like us. A way to, I think personally, a way to engage with the concept of peace is to think through conflict in a way where you are not xenophobic, in a way where you're understanding that by the end of the day, I might be from a different religion, from a different location, I might have a different color of my skin, but at a very core level, we're able to engage with each other at a humanitarian level. As I told you earlier, we are running a channel called Vishwa Shanti Darshan, where we publish or telecast only positive news. Positive and inspirative news items. What would you say about that? I think it's fantastic because what is also happening is that the media today has been badly abused for also polarizing people. As we were talking about at the session right now, we have actively people who are branding students as anti-nationals, branding a certain community as terrorists, and this kind of active polarization that is happening, not just in India, across the world, I think has also given news a very bad name. Where we say, यहाँ पे people are going to scream and shout, people are going to भड़काओ, people are going to get consumed in, post-truth kind of a thing. I think we have to, an initiative like this is important because we have to slow down, we have to listen, we have to understand that there is a difference between polarizing people and informing people, and I think it's also important to claim that news is always not negative news only. फरा खातून बोली, वर्ल्ड पीस की बात चल रही है हर जगह, एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट द मीडिया हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन एस्टैब्लिशिंग पीस वर्ल्ड ओवर. इज द इंडियन मीडिया डूइंग इट? इफ नॉट, व्हाट इट नीड्स टू बी डन? कभी कभी ऐसा है कि कर रहे हैं और कभी कभी नहीं भी कर रहे हैं. कभी कभी ऐसा हो रहा है, ऐसे खबरें आ रही है जिससे पूरा समाज में ना एक हलचल मच जा रहा है और लोग परेशान हो जा रहे हैं कि क्या हो रहा है ये कंट्री में. तो वो उस तरह की जो चीज़ें हैं, और जो कभी कभी मीडिया ऐसा भी करता है कि लोगों को भड़काने का जो काम है वो काफ़ी होता है, स्पेशली मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल के थ्रू. वो आई थिंक फ़िल्टर होना सबसे पहले ज़रूरी है. मीडिया को एक ऐसा रोल प्ले करना चाहिए जहाँ पे सब लोग साथ में आ सकें. एक जो यूनाइटेड इंडिया का जो थॉट है, जो गांधी जी का थॉट रहा है, जो नेताजी का थॉट रहा है, वो थॉट को लेके आगे बढ़े. ऐसे बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स ऐसे भी हैं जो स्पेसिफिकली इस तरह के काम कर रहे हैं जहाँ पे वो हेट पॉलिटिक्स नहीं फैलाते हैं. आई थिंक वो जब हो जाएगा, अगर हम न्यूज़ चैनल की बात करें, वो डिफरेंशिएशन जब हो जाएगा, जब उनको समझ में आएगा कि एंटरटेनमेंट न्यूज़ और एक्चुअल न्यूज़ में फ़र्क क्या है, तब आई थिंक बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी. आपने विश्व शांति दर्शन के बारे में सुना है, क्या कहेंगे उसके बारे में? ये एक बहुत ही अहम स्टेप है और हम सबको पीस के वो काम करना चाहिए. और मैं बहुत सारा बधाई देना चाहूँगी आप सबको इस आपके ये विज़न के लिए. ऑल द बेस्ट.